मैं आप सबको पहले तो गुड आफ्टरनून विश करना चाहूँगी और मैं ये बोलना चाहूँगी कि इकोनोस्पीक की तरफ से मैं बोल रही हूँ और जैसे कि आप सबने जानते होंगे आप कि हमने इंस्टाग्राम पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो अब हम फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में, जो कि पीस ऑफ माइंड और अपने घर के वातावरण के लिए और आपकी सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सबको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ही रखनी चाहिए ताकि हम लाइफ में ग्रो कर पाए, जैसा कि मोदी जी कहते हैं एंड गांधी जी ने करा है, और वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग को अपनी लाइफ का मोटो बना चुके थे। एंड हमें भी उन्हीं के जो उन्होंने रास्ते बिछाए हैं इस चीज के, हमें उन पे चलना है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी दीपांशु जी को, जो हमें और बताएंगे इस चीज के बारे में। सो प्लीज वेलकम दीपांशु। Hello everyone. Hello everyone. Am I audible? Yes, Dipanshu, you're audible. You can Yeah. start. Yeah. Good evening. So today's our topic is simple living and high thinking. Basically, these are just four words: simple living, high thinking. But these four words depict or conveys a great message. Many people think that simple living is just avoiding all unnecessary luxuries and wearing simple clothes and much more. Some people say that simple living is just equal to no show off. But according to Gandhi ji, basically simple living is focusing on our needs rather than our greed. So this was a great message conveyed by Mahatma Gandhi ji. Simple living, high thinking. High thinking is really that thing which one must follow in our life, and it will actually make you rich. Not in terms of money, but in, we can say, in terms of your personality development. If you are thinking optimistically and if you are thinking positive, then trust me, you have a really good knowledge of high thinking, and you are following the path of Gandhiji and following the path of high thinking. Basically, high thinking basically means having a positive and a broad mindset. And I think I will start this with a small story. I thought that everyone has heard about Mr. John Lennon. Mr. John Lennon is an English speaker, is an basically English songwriter and an English singer. So I will start with his story. I would like to quote a small story of his life. When he was 5 years old, his mother usually tell him that happiness is the key success. Happiness is the key to success. And when he started his schooling, and his teacher and other persons usually ask him that what you want to become in your life when you grow up. So he always replied that I want to become a happy person. So that's a really a good thing, that everyone in life want to become a happy person, but in the race of becoming successful, some not even get their life happy. So basically, simple living and high thinking is the key to become successful by becoming a happy person in your life. Basically, simple living, high thinking, sada जीवन उच्च विचार. And I would like to tell you all that our platform EconoSpeak, which means economy will speak. I will just like to give you a small intro, because our founder of our EconoSpeak is with us. She can tell better than us. So I will tell you that EconoSpeak, which means the economy will speak, is a dynamic pro learning program which was initiated by our founder,
Miss Ramanpreet Kaur Nayyar on 27th March 2020. Basically, the aim of EconoSpeak is to create a multi-dynamic public platform initiated uh, which welcomes innovative ideas and creative minds to exchange and share their knowledge. Basically, sharing of knowledge. It's a platform where one can learn from other person's experience. Uh, EconoSpeak follows basically the three principles. That is the principle of three A's: anyone, anytime, and anywhere. And EconoSpeak also offer different activities to interact with the audience, like we are doing one so here. And also it also engages in some social activities and contribute towards the part of society. During this quarantine, EconoSpeak is supporting many peoples by providing rations and all, and also it is trying to engage students and focusing them to engage in academics by conducting many programs like group discussion, quiz, debate, webinars, and all. And also not only academics but some programs, co-curricular programs are also conducted by EconoSpeak, like singing, dancing, and painting and all, which also enhances the talent of the student. Basically it believes that one must grow not only with academics but also with the co-curriculars. So I would like to say that how EconoSpeak is, I would like to tell you all that EconoSpeak is also contributing towards and following the path of simple living and high thinking. This basically this program is enough capable, and it is a capable platform making youth sensitive about the societal happenings, and it is also chain to bring all the students together towards the betterment of society. Basically it is trying to create a positive externality in the environment, and creating a positive externality helps in making the people happy of the society. So basically EconoSpeak is contributing towards and following the path of simple living and high thinking. uh, thank you so much, Asta, for giving me an opportunity to speak on the behalf of team EconoSpeak. Thank you. थैंक यू सो मच दीपांशु, आपने बहुत अच्छा बोला एंड आपने इग्नोस्पीक को बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट किया। आपने इग्नोस्पीक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हमें, हम बहुत थैंकफुल हैं। और मैं भी थैंकफुल हूँ कि मिसेस रमनप्रीत कौर नैयर ने मुझे और हम सबको मौका दिया यहाँ बोलने का और इग्नोस्पीक में आने का, और उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। सो हम सब उनको थैंक यू बोलना Yes, चाहेंगे। yes, we all are blessed that we got an opportunity from Miss Ramanpreet Kaur to exchange our views or to show our views on this platform. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। एंड अब मैं चाहूंगी कि हर्षिता ध्यानी है हमारे साथ, मिस हर्षिता ध्यानी, तो वो इस टॉपिक को दीपांशु भैया के बाद संभालें, वो बोलें इस चीज के बारे में। हम आपके व्यूज भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Astha, and good evening, everyone. तो आज पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ और आप सबके साथ। एंड जो आज का टॉपिक है ये हमारे लाइफ का टेक्निकली मॉरल लेसन होना चाहिए। ऑल्दो आजकल ये काफ़ी डिफिकल्ट है फॉलो करने के लिए, बट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एक इंसान की लाइफ में शायद कुछ नहीं हो सकता। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को सोच के लोगों को लगता है कि शायद ये चीज़ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लिमिटेड है कि आप लोग बिल्कुल मिनिमम यूज़ करके चीज़ों का रहें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल लिविंग में ये नहीं होता कि आप अपने पसंद नापसंद को रोक के कंस्ट्रेंट करके खुद को बांध के रखें। नहीं, सिंपल लिविंग का मतलब होता है आप अपने शौक पूरे करें, आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करें, आप जो चाहते हैं वो पाएं, बस उसे इस तरह से डिस्प्ले ना करें जिससे कि सामने वाले को
लगे कि आप उन्हें कुछ जता रहे हैं या आप उनसे कुछ दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से सुपीरियर है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सिंपल लिविंग में इट मस्ट बी शेयर्ड विद यू एंड योर फैमिली कि यू आर एट हैप्पी प्लेस, आप खुश हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बांटे, बट उसे ब्रैग करने की जरूरत नहीं है। और वो हाई थिंकिंग इट इज अ लाइक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो आप ग्रो करते हुए अपने में डेवलप करते हैं। थिंकिंग इज अ प्रोसेस जो आपका माइंड कैरी आउट करता है, एंड उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, जिससे कि आप अपनी थिंकिंग को एलिवेट कर सके, आप बेहतर जाने, बेहतर समझे, अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना करें, लोगों को बुरा फील कराने के लिए कुछ ना करें, बट सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचे। इसमें मतलब हाई थिंकिंग के लिए जरूरी है कि आप सब कुछ एक मदद के लिए भी करें। जैसे आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें कि उन्हें हमारी किसी हैबिट से प्रॉब्लम ना हो, या आपके अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई सफर ना करे, उसमें किसी लाइक चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कुछ भी हो, उन चीजों पे गलत असर ना पड़े। तो उसमें जब आप अपने से बढ़कर लोगों के लिए भी सोचने लगते हैं, तो वो आपका हाई थिंकिंग की तरफ एक कदम होता है। आजकल सबको लगता है कि ये बोलना आसान है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बट मेरे हिसाब से अगर ये चीजें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें तो वो बहुत इजीली हम अचीव कर सकते हैं इस मोटो को अपनी लाइफ में। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जो इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया, सब कुछ किया, पर कभी उन्होंने उस चीज का गलत तरह से जताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस चीज को हमेशा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनाने की कोशिश की। दूसरा जो है मेरे लिए वो लाइक MS धोनी है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए सब कुछ फ्रंट फुट पे रह के लीड किया, बट उन्होंने जब उसमें विक्ट्री में अपना शेयर लेने की बारी आई, कभी ऐसा नहीं किया कि टीम को पीछे छोड़ा। आप जब अपने साथ वालों को भी लेके आगे बढ़ते हैं तो वो चीज आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अकेले तो सब लोग सब अचीव कर सकते हैं, पर किसी को साथ लेके उसको भी बढ़ाना वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद मेरे तो साथ मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज के लिए मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करूं। मेरी फैमिली है और मेरी फ्रेंड है जो डॉक्टर है करंटली। उसने कितनी मेहनत की, बट उसने आज तक वो जितना कर सकती है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत मेहनत करती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इनकलकेट इन आवरसेल्व्स कि हम इस चीज को अपने लाइफ में अपनी रूट्स बनाएं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपने शौक पूरे करें, सब करें, पर कभी किसी को जताने के लिए या बुरा फील कराने के लिए हम ऐसा ना करें। ये इस चीज में सबसे इम्पोर्टेंट है। और लोगों को लाइक खुद भी खुश रहें, लोगों में खुशियां बांटे। एंड मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि मैं इकोनोस्पीक का पार्ट हूँ, जो इस चीज को हम अपने अंदर ग्रो कर सकते हैं वो लोगों के साथ बांट भी पा रहे हैं। इकोनोस्पीक हमारे लिए वो इनिशिएटिव है जहाँ पे हमको एक ग्रो करने का मौका मिल रहा है, जहाँ हम अपनी स्किल्स को, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को और सारी क्वालिटीज को खुल के एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन्हें बेटर कर सकते हैं। एंड जिस तरह से हमारी मैम हमें सपोर्ट करती है, तो इट्स लाइक कि या वी आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक कि हम इस चीज को खुद में भी डेवलप करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को, और आगे भी बढ़ाते रहें और लोगों को भी ये अच्छा मैसेज देते रहें कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी लाइफ में ये जरूर होना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का एजेंडा। एंड थैंक यू आस्था फॉर asking me to speak on this. थैंक यू सो मच हर्षिता। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, जो आपने बताया कि वी हैव टू बी ग्राउंडेड, एंड जितना हम कम्युनिटी को दे पाए उतना कम है। और थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगी जयश्री आर्या को कि वो कुछ शब्द बोलें इसी टॉपिक पे। एंड थैंक यू सो मच जयश्री, एंड प्लीज।
Thank you so much, Astha. On the behalf of EconoSpeak, I would like to welcome each and every one of you. And today's topic is a very interactive and very important topic, which everybody should deal and accept in their lives. It is simple living and high thinking. I believe that simple living means that you should live according to your limited needs, not with your unlimited greeds. And high thinking is beyond your own desires, I guess. It makes you a wise person and it helps in your evolution path in your life, and it helps you grow and think beyond your desires. Mahatma Gandhi was once asked to describe the ideal lifestyle. He responded by saying very simply and beautifully that simple living and high thinking is the ideal lifestyle. So this is what it all counts, that you don't need anything else than simple living to live a healthy and beautiful life. With this, I have a question for each and every one of you here, that I believe simple living is an integral part of good health and a great thinking of mind. What do you guys think about it? I want to know it from Ramanpreet ma'am. What do you think, ma'am? Well, Jayashree, thank you so much for inviting me. On behalf of Team EconoSpeak and my personal behalf, first of all, I would like to invite each and everybody, all the audience who are here with us, sharing this platform, so that we can actually communicate and we can share our views and ideas on this very important topic, which is simple living and high thinking. Now, of course, this topic is nothing new. We are nobody here to discuss a lot on this, because we are actually, yes, of course, the discussions are important, but we are not initiating this discussion in a way that this is not our topic. ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है. अगर हम बात करें अपने पुराने ज़माने की, जहाँ पे हम अगर बात करें हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, सो महात्मा गांधी जी, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, क्यों इतना बड़ा खिताब हमने उनको दिया? फादर ऑफ द नेशन ऐसे ही किसी को नहीं कहा जाता. आप आज अगर एक छोटे बच्चे हो, अपने पेरेंट्स को अगर आप हम जितनी वैल्यू करते हैं उतनी कम होती है. बट वो क्यों करते हैं? बिकॉज फादर इज द पर्सन हु इज एक्चुअली डूइंग ईच एंड एवरी थिंग फॉर यू, सो दैट वो अपने आप, हो सकता है खाए ना, हो सकता है पिए ना, हो सकता है 4 चीजें कम खरीदे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि जो उनके बच्चे हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है वो अच्छे से जी सके. सो अगर हम एक पूरी फैमिली की बात करें, सो फादर को क्यों इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, ग्रैंडफादर को क्यों इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है? क्योंकि पूरा दिन रात वो मेहनत करके पूरी फैमिली के लिए वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लेकर आता है, सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड कैन लिव हैप्पी एंड हेल्दी. सो ये महात्मा गांधी जी के टाइम की बात है. और अगर हम आज अपने घरों में भी देखें तो ये आइडियोलॉजी तो सब, मेरे ख्याल, हर घर में होती है. सो इट्स नथिंग न्यू, इट्स नथिंग दैट वी आर क्रिएटिंग, इट इज समथिंग दैट वाज taught and explained years ago, सेंचुरीज अगो. अगर हम बात करें अपने रिलीजन्स की, जिनको रिलीजन तो हम लोगों ने ही बनाया है एक तरह से, पर एक्चुअली क्या है, देयर इज ओनली वन सुप्रीम पावर. So whether it's taught in the terms of any religion, let's say Hinduism, Sikhism, Muslim, or if we talk about the Jainism, Buddhism, any culture, any religion is only talking about one thing. They are only preaching one thing, that it is the thing which is important is unity. Unity, oneness, universality, ये सब क्या है? ये सारे ही शब्द सिर्फ एक ही चीज को एक्सप्लेन करते हैं, that unity in strength and unity in diversity, which is the most important thing. अगर आपको याद हो, जिस दिन हमने अपनी वेबसाइट भी बनाई थी, उसमें हमारी जो प्रोमो वीडियो थी, जो हमारी फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो थी, वो किस चीज पे थी? वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे ही थी. हम अपने साथ साथ इकोनोस्पीक एक्चुअली ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता है दैट ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो हम लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं, चाहे रिलीजन के थ्रू करे हैं, चाहे कास्ट के थ्रू करे हैं, चाहे क्रीड के थ्रू करे हैं, चाहे कलर के थ्रू करे हैं, ये सब क्या है? ये सब बनाए हुए हैं, ये सब हम लोगों ने ही क्रिएट करे. हमारे सारे धर्मों में एक ही चीज बोली गई है, दैट देयर शुड बी वननेस, देयर शुड बी यूनिवर्सलिटी. अभी हमारे ही जो प्रीवियस स्पीकर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बोले, जिनमें से एक पॉइंट मैंने सब में से नोट किया था. हर्षिता ने एक बात बोली थी इंक्लूसिव ग्रोथ की. सो यस, इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट
हमारे जितने भी रहे हैं उन सब में एक ही बात कही गई कि किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। सो 1950 से लेकर 2010 तक अगर हम बोलें तो वो एक ही चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते आए हैं। हमारे सारे प्लानिंग कमीशन, हमारे सारे प्लानर्स ने एक्चुअली यही चीज एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। 12 5-year प्लान के बाद जो अभी हमारी नीति आयोग आई है उसमें भी हमारा एक ही मोटिव है, दैट इज मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सो वी वर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट चेंज हुई लेकिन एजेंडा चेंज नहीं हुआ। हर एक यही चाहता है कि हमारा ग्रोथ किस तरीके से इंक्लूसिव हो सकती है और हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। पहले हम लोगों ने ग्रो करने की बात करी, जिस तरीके से हम हमारे पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, वो बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो अगर हम 17 अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो जो हमारे शुरू के जो गोल्स हैं वो किस चीज पर हैं, वो बेसिक्स पर है। बेसिक्स आने के बाद आप कंफर्ट्स पर आते हो। पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटीज, उसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट्स, और अल्टीमेटली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, लग्जरीज। सो यही एक सोसाइटी को बताता है। एक सोसाइटी क्या है, एक सोसाइटी बनी हुई है डिफरेंट मतलब स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कंपोज करती है एक सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी है ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले हैं तो इकोनॉमिक्स की तरह ही एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरी सोसाइटी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर है, जिसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। समबडी and half of the population is living under the median and half of the people are living above that median line. उसका मतलब ही क्या है, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आधे लोग जो होंगे वो एवरेज से कम होंगे और आधे लोग जो होंगे वो एवरेज से ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो हमेशा असिम्प्टोटिक होता है। असिम्प्टोटिक का मतलब हुआ कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, और उसका भी एक रीजन है, क्यों, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। हमारे इकोनॉमिक्स हो या हमारे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, वो एक ही चीज समझाता है कि देयर इज नो लिमिट, व्हाई आर वी लिमिटिंग आवरसेल्फ। सो ये ह्यूमन बीइंग्स ने भी जो अगर हम बोलें कि जो लिमिटेशंस बना दी हैं, सो क्यों बनाई हैं, दिस इज समथिंग which has been created by ourselves। किसी बुक में, किसी भी किताब में, किसी भी जगह पे, किसी भी प्रीचर टीचर, किसी ने आज तक ये चीजें नहीं एक्सप्लेन करी, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई है। इसी तरीके से एक और पॉइंट जो दीपांशु ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था, दैट वाज AAA। So AAA is one of the ideology of EconoSpeak. Why? Because we are talking about that we are creating such a platform which will be a multi-dynamic platform and will be for all. Anybody and everybody who has a zeal, who has an enthusiasm to learn from others and to increase, or we can say to grow from the others' experiences, then we can say that this platform is yours. So AAA here means anytime, anywhere, and anyone. So we are not creating any limitations for the growth. And again, आस्था ने भी ये बात बोली और हर्षिता ने भी ये बात बोली थी that we should not forget that we should be grounded. We should not forget our roots. आज ही मेरे इस सेशन से पहले मेरी एक काफी पुराने एक मतलब मेरे मदर के एक बहुत ही पुराने फ्रेंड थे, उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे यही चीज बताई, और उनको जब ये टॉपिक पता चला तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे इसको सुनने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बट अगेन वी नो दैट देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बिकॉज ऑफ विच we can't and of course there is a barrier, we can't put everybody and anybody on the screen because we have a limitation of 6 people at a time. So I can't invite him here on the session, but of course his messages can be actually communicated through me. Why? Because I am already saying that this EconoSpeak is a platform which is actually communicating the messages of others. So उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया था। वो अभी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उनका घर है, जो ऑब्वियसली वो एक फ्लैट में रहते हैं, लेकिन पीछे से उनके रूट्स जो हैं वो एक गांव के हैं। सो हिमाचल में उनका लगभग 15 बीघा का एक पूरा, आप कह सकते हो उसको क्या बोलोगे आप, पूरा प्लॉट है जिधर उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। और वो यही बता रहे थे कि दिल्ली में तो हम बहुत कम टाइम बिताते हैं, हम बार बार जो है जब मन करता है अपना गाड़ी उठाते हैं और हिमाचल चल देते हैं। और उसी तरीके से उन्होंने एक और चीज बताई कि वो एक्चुअली क्योंकि शामली को भी बिलोंग करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो शामली में रहते हैं। तो मुझे उन्होंने बोला कि जिस दिन ये कोरोना और जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं चाहूंगा कि आप इधर आइए और अपने बच्चों को भी लेकर आइए। उन बच्चों को एक दिन छोड़ेंगे हमारे पेरेंट्स के साथ, उन्हें पता चलेगा कि कैसे उनको मतलब गांव की जो फील है, जो एक्चुअल फील है हमारी ग्राउंड की, जो मिट्टी की, वो उन बच्चों को याद करानी है। So of course this is very important that we should not forget our roots.
So another one which Jayashree was saying, that Jayashree has mentioned basically, that we should not limit ourselves, and means that we are actually talking about the greeds and not about the needs. Why are we becoming greedy every day? And the thing which we should focus is a healthy life, a healthy lifestyle, and think beyond the desires. क्योंकि हम तो बात ही इकोनॉमिक्स में डिजायर से ही करते हैं. कोई भी डिजायर जो है वांट तभी बनेगी जब आप उसके लिए पूरा परिश्रम करेंगे या पूरा एफर्ट लगाएंगे. So desire can become want only if there is a willingness to achieve that desire. And of course, then you need a financial strength as well. So I'll stop here, because आप तो मेरे से ये सेशन पे जितना मर्जी बुलवा लो, ये 1 घंटे का सेशन तो बहुत छोटा है उसके लिए. But I'll stop here and request Jayashree to actually invite the other speaker on this topic to share her views on the same topic. Thank you, ma'am. Thank you for your lovely words. I would like to welcome Ma'am Gurvinder Kaur Suri, and I would like to know her views on this topic. What do you think about this topic, ma'am? Please enlighten us with your words. Thank you very much, Jayashree, and team members present here. Uh, you know, uh, beginning of whatever we want to speak should be something that actually explains the entire thing that we like to speak. And having said that, there's something that is very common amongst us all. And I'm not just talking about the 6 people, the 6 honorable speakers here, but also everyone hearing this, everyone who has ever thought about this concept of simple living and high thinking. And what is that common aspect to all of us? It is humanity. And when we talk about humanity, where does it begin from? Like what Dipanshu said, Harshita said, Jayashree said, Ramanpreet said, and all the other speakers, including Asta. I'm so sorry to interrupt you, ma'am. Ma'am, your voice is not. Oh, I'm sorry. Just a second. प्लीज हाँ, वो अपना हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि आपकी आवाज पूरी ब्रेक होती जा रही है. Okay, just give me a moment. So, in between, to cover up this time, ma'am, I would love to ask you this question, Ramanpreet, ma'am, that Yeah, sure. what was your motivation and inspiration behind EconoSpeak? We all would love to know about it. Yes, this question is actually a very small question, but the answer is a little too long. So probably this session is, if I would say that this session is too short for that. But I'll sum up and I'll give you in one line that the motivation is my entire family. When I say this, the family, so this family was a very small family when I was actually born in that family. But when I have explored, when I have actually I'm meeting people, and when I'm greeting people, then my family has extended. So the extended family actually means anybody and everybody who is connected through me. So the motivation is actually the entire family. I want that none of us in this family should be targeted or should be hit hard because of this negativity. Because I believe that अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जितनी भी बार अपना इकोनोस्पीक के बारे में बोला या जितनी बार भी वॉलंटियर प्रोग्राम इसके लिए रेज किया, वो सिर्फ इसी चीज पर था that when we talk about physical health of the nation, everybody is concerned about the physical health. But what about the mental health? Nobody is interested, and nobody actually acknowledges that the mental health is more important. Your economy can only grow when the mental health will grow. And how are we forgetting that? We are only concerned about the physical health. So this is something that we all should take care, and we all, in fact, including all the stakeholders, all the responsible stakeholders of the economy, including the government itself and all the individuals, we all need to think that what we can do to safeguard our mental health of the nation. So this was one of the basic motivation, I would say, because अगर आप कोरोना को ही देखो, जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था, so इस लॉकडाउन में of course there are both kinds of externalities. We have positive and negative externalities working together, or we can say that we are experiencing both the negative and the positive externalities together. So towards the negative side, if I say, so many people were actually drowning in the ocean of anxiety, depression,
which is a major concern. I don't want our brains, our young brains, especially if we talk about the entire economy. So our economy is dominated by the young brains, जिनको हम बहुत अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट वो नेगेटिव की साइड जाने लग गई थी. सो इफ आई टेल यू, द ऑफ कोर्स डिप्रेशन इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैंने ये इकोनॉस्पीक का जो मेजर ऑब्जेक्टिव मेरा था उसको स्टार्ट करने का, वो यही था, जिसमें सबसे पहला जो मोटिवेशन आया था वो तब आया था जब मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रही थी और मेरी ही एक स्टूडेंट जो कि टॉपर और मेरिटियस स्टूडेंट होती है, वो अपने स्टेटस पे क्या लगाती है, उसने उसमें लगाया था कि वो अपने घर पे आई मेकअप कर रही है. सो मुझे उस दिन देखकर लगा कि इतनी अच्छी स्टूडेंट जिसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो किस साइड को मूव कर रही है. वेयर इज द फोकस ऑफ द नेशन, वेयर आर दे गोइंग. अगर वो न्यूज भी सुन रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे कि इस टाइम पर हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों में हाथ ना लगाओ, फेस पर हाथ मत लगाओ. और उस टाइम पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कि इतने अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, बोलने में भी अच्छे हैं, और वो कर क्या रहे हैं. और इसी तरीके से मैं ये सिर्फ अपने स्टूडेंट की क्यों बात करूं, मैं उन छोटे बच्चों की भी बात करना चाहूंगी जिनको मैंने अपने घर के आसपास देखा है. 2 से 3 साल के बच्चे हैं और वो रोज शाम को अपने पेरेंट्स से इस बात के लिए लड़ रहे होते थे कि हमें घर से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो. उनकी एक्चुअली रोज पेरेंट्स से लड़ाई हो रही होती थी कि क्यों हमें घर के अंदर बांध रखा है. सो कुछ बच्चे तो बहुत समझदार हैं जो मेरे बिल्कुल नेबरहुड है. वहाँ पे 3 साल का एक लड़का है जिसके बारे में आपने शायद मेरे इकोनॉस्पीक पेज में बहुत बार देखा होगा, आयाम. अब वो भले 3 साल का है बट उसका माइंड इतनी अच्छी तरह से, उसका न्यूरल डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रखा है, उसके पेरेंट्स उसको हर चीज समझाते हैं, कभी कुछ बुलाते नहीं है. सो वो तो मुझे कहता है कि नहीं दीदी मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है. तो उसके दिमाग में ये बात थी, उसको समझ आई. लेकिन उसी के आसपास जब मैं और बच्चों को देख रही थी जो इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो बच्चे कुछ टाइम पहले अपने पेरेंट्स से इस बात के लिए लड़ते थे कि मुझे स्कूल क्यों भेज रहे हो, वो आज लड़ रहे हैं कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो. तो इस चीज को देखते हुए मुझे लगा कि इन बच्चों को भी कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत है. एंड फिर मैं आई अपनी मम्मी के घर. मेरे फादर की उस टाइम तबीयत खराब हो रही थी, मेरी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं बीच में एक दिन मम्मी के घर चक्कर मारकर आई. और जब मैं उधर गई तो हमारे जो टेनेंट है उनकी भी एक 2 साल की डॉटर है, 2.5 आई गेस. सो उसकी मदर की हालत देखकर मुझे बहुत उस दिन बुरा लगा. वो कहती है कि शानू मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, ये बच्चे स्कूल कब जाएंगे. कि एक्चुअली दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम. आई थिंक गुरविंदर विल बी एबल टू हाईलाइट मच ऑन दिस बिकॉज she is facing these difficulties, that what is the parents side when these students, especially these young students, are sitting at home. So of course I was the one, I am into higher education, so I was facing this problem from the higher education side. But of course the higher education में तो जो बच्चे हैं जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ वो 12th passed हैं, वो लोग एटलीस्ट अपने बारे में डिसीजंस लेने के लिए खुद जिम्मेदार हैं. अगर वो गलत सोच रहे हैं या वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो खुद जिम्मेदार हैं. बट व्हाट अबाउट दोज जो 12 से पहले या 18 साल से नीचे वाले बच्चे हैं. तो आई थिंक दिस विल बी कंटिन्यूड बाय गुरविंदर. But the other question which you were saying, that who is the inspiration? So I would say the inspiration is coming from within, probably one because of the religion, second because of the blood. So it comes genetically. So I think this was one of the topic that we were discussing, and we keep discussing at home. So ये sessions तो बहुत कम है, I guess उसके लिए हम लोग घर पे ये बात करते ही रहते हैं. So my grandmother, and then my grandmother is my nani I'm talking about. Of course, my grandmother from the paternal side, my dadi was also one of them, but now she's no more. So with her blessings and with the blessings of my present maternal grandmother, I would say that the inspiration probably is coming from them. So वो लोग इस simple living और high thinking के perfect examples हैं. उन लोगों ने ये सब चीजें हमें बहुत पहले ही सिखा दी थी, शायद हम लोग उसको उतना कंटिन्यू नहीं कर पाए, but I think now is the right time that we need to continue. And of course फिर then it comes like from my grandmother to my mother and from my mother to me. And we have another example, Gurvinder is actually my sister. So again, so actually ट्री तो क्या है, वो ट्री तो जो रूट्स है वो तो फिर वो ग्रैंडमदर ही हुई ना. ग्रैंडमदर के आगे जो ब्रांचेस आई थी वो मेरी मदर और मेरी मासी थी, और उनके जो आगे हमारी जो, अब मैं बोलूं कि जो हम टहनियां हैं, so one is me and the other one is Gurvinder. So I'll pass on this question to her now.
So probably she'll explain it and continue the session. Thank you so much, ma'am. I would like to come back to Gurvinder, ma'am. Ma'am, please, can you enlighten us with your words again? Mike. And there's no audio. Audio. No. Hello. Yes, ma'am. Yeah. So these are again few of the problems that you know that it arises. और ये भी एक point अभी बीच में आया था that we are so much technology driven. हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि टेक्नोलॉजी अगर बीच में हमें धोखा दे जाए तो हम उसको कैसे कोप अप करने वाले हैं, ये भी एक चैलेंज है. एंड वी हैव टू फेस दोज चैलेंजेस. सो जैसे कि मैं सेशन के पहले ही आपको बोल चुकी थी कि we don't have to stop, we can't stop, the show must go on. ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी. So this is something that we need to understand. So जितनी भी बार हम लोग यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, हम लोगों ने देखा है कि यूनिवर्सिटी में हमारे क्या होता है कि बहुत बार सेशंस होते हैं, जो बच्चे आते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर प्रेजेंटिंग, सो प्रोबेबली व्हाट डू दे गेट, they get a piece of paper plus they get a presentation file and then they're waiting for the projector. So होता क्या, इन केस अगर उसी दौरान कभी लाइट चली जाए तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि इन केस अगर सेशन में बीच में लाइट चली गई तो क्या होगा. So I would again like to explain you here why I'm coming to this point, that we should be prepared for every challenge. So Gurvinder is back here. Let us see if she can. I think can you hear? Yes, she can hear, but her voice is not audible. So no, you're not. We can't hear you. So I'll request Jayashree to kindly ask this next question by that time. Yes, ma'am. I would like to know that how is EconoSpeak working for this thing? Like, it is promoting simple living and high thinking. How is Yes. EconoSpeak working for it? Like, what is the motto behind EconoSpeak? Is it one of the main mottos of EconoSpeak? Okay, thank you so much, Jayashree, for the second question. Yes, EconoSpeak is working hard day and night. So it's only probably 45 or 46 days or maybe a little more that we have started this initiative. We took this initiative 2 months back, around 2 months back, 27th of March. So if you see the growth of EconoSpeak, so why I'm telling this, because EconoSpeak was just like a seed. मैंने उस सीड को अकेले ही एक तरह से जो है मैं बोलूंगी प्लांट किया था, बट धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो बड़ा होता गया. आपके सामने ही इधर जो आप लोगो देख पा रहे हैं, ये लोगो भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जिसको मैं कहूंगी कि मेरे एक फ्रेंड है दिशा, जिसको समझ आया कि इकोनोस्पीक क्या है, तो उसने मुझे सबसे पहले एक लोगो गिफ्ट किया बनाकर. वो शी इज अ डिजाइनर, सो शी डिजाइन दिस फॉर मी, और आई कैन से दैट फॉर इकोनोस्पीक. एंड इसमें ही बहुत अच्छी चीज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो एक छोटा सा पौधा बन गया. सो जो एक छोटा सा सीड, मतलब जो मैंने एक मिट्टी में डाला था, वो आज मुझे दिख रहा है कि वो 3 पत्ती के साथ वो पौधा बन गया. एंड ये एक्चुअली मेरे इस प्लेटफॉर्म का ही, अगर मैं बोलूँ, मेरा तो नहीं, अब तो ये सबका प्लेटफॉर्म है, ये हमारे सबका प्लेटफॉर्म का ये एक रिफ्लेक्शन है. सो वो सीड जब थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो मेरे साथ 3 लोग बिल्कुल हाथों हाथ, लेफ्ट एंड राइट हैंड थे. सो हु वर दे? सो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस बहुत बड़ा नाम दिया जा रहा है कि मैं इसकी फाउंडर हूं, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शायद मैं ही इस बारे में सोच रही थी. जब हम बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था, बट मेरे ऑफकोर्स को फाउंडर्स जो लेफ्ट एंड राइट हैंड है वो बिल्कुल बराबर के हैं. सो आई थिंक it was I must say that I must actually mention my right hand is Mrs. Harminder Kukreja, which is I would like to say that she is another senior faculty, a retired faculty with lot of
I would say lot of energy, double the energy. अगर आप मेरे में कुछ एनर्जी देख पा रहे हो तो उनकी वो डबल ट्रिपल है, और अगर आप मेरे को ये समझते हो कि मैं कुछ समझा पा रही हूँ तो वो मेरे से 3 गुना ज्यादा समझा सकती है. So she was my right hand, rather I would say in this logo she is the one which I would like to place it at the center. So उनके आसपास हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं. So and second side पर मैं बोलना चाहूंगी कि जो मेरी लेफ्ट हैंड है वो है वर्तिका सिंह, वर्तिका पांडे सिंह, जो कि मेरी ही कलीग है दून यूनिवर्सिटी में. 2 साल पहले ही उन्होंने हमको यहाँ पर ज्वाइन किया है, बट इस 2 साल के अंदर हम लोगों के जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है जिसको ये वही मैं जो कह रही हूँ कि इस छोटे से टाइम पीरियड में बताना बहुत मुश्किल है. बट यस, अगर मैं इस लोगों की बात करूं तो इसमें मैं कुकरेजा मैम को सबसे सेंटर में रखूंगी, अपने को एक साइड में रखूंगी और वर्तिका को दूसरी साइड में रखूंगी. और मैं यही कहूंगी कि कुकरेजा मैम सिर्फ हमें नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी को एक तरह से वो गाइड करती हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं. सो जैसे एक माँ अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वो भी हमारी दूसरी माँ है जो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का ख्याल रखती है. So this was my side on this particular question. Definitely, ma'am. I would like to add something related to Ma'am Harminder Kukreja. Right. She has been teaching me since school time, since 9th Oh. class. She's been teaching me economics since 9th. And the way she taught, it was like completely different. Right. She is one of my favorite teachers in school. She is like a motherly figure to me. Whenever she meets in college, she always greets everyone so nicely, so warmly. So she's a very nice person. Right. And so yes, I would again like to add here that when we are talking about relationships and when we are talking about nature, so मेरे को किसी मेरी एक और जो जानने वाली हैं, बहुत ही अच्छी लर्नेड मैं कह सकती हूँ सीनियर हैं, जिनको मैं बोलती हूँ भाभी, और उनका नाम है रानू. सो रानू बिष्ट, जो मेरी इमीडिएट नेबर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी सी एक बात बताई थी कि रमन, you know, relationships are like a plant. You should actually take care of those plants. जितना आप उसको, मतलब जितना आप उसका ख्याल रखोगे उतना ही वो ग्रो करेगा. और मैंने भी इकोनोस्पीक में इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे ऑडियोज बनाए हैं, जिसमें हमने यही एक्सप्लेन करा है कि अगर हम सब मिलकर एक माली की तरह उस पौधे का ख्याल रखेंगे, सो वो ग्रो करेगा ही करेगा. जो मैं देख रही हूँ कि इकोनोस्पीक की ही बात करूँ तो एक छोटा सा प्लांट आपको सामने दिख रहा है, एक सीड की तरह शुरू हुआ था और वो ग्रो करते करते बढ़ चुका है. आज की डेट पर मैं अगर ग्रोथ की बात करूं तो मेरे मोर देन 100 आई हैव माय कोर मेंबर टीम एंड मोर देन 500 प्रोबेबली आई हैव माय बैक एंड टीम. सो उसी में से मैं एक्सप्लेन कर, अगर मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करूं तो जयश्री, हर्षिता, ये सब मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं. ये थ्रू आई वुड से दैट थ्रू चेन इफेक्ट और थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट आई हैव गेन दीज जेम्स. सो इन्हीं के साथ मैं 2-3 और नाम भी लेना चाहूंगी जो ऑफकोर्स कनेक्टिविटी और इंटरनेट इश्यूज की वजह से मुझे ज्वाइन नहीं कर पाए. But again, I would like to thank, and I'm very glad that I'm blessed with these people. One is Anupam. Again, हर्षिता मेरी स्टूडेंट नहीं है, अंकिता मेरी स्टूडेंट है, जिसकी सिस्टर हर्षिता है. और अंकिता के थ्रू मुझे बहुत सारे लोग मिले. वन, हर्षिता, अनुपम, शुभी, आकांक्षा, एंड देन वी हैव जयश्री नाउ. सो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि किस तरीके से एक छोटा सा जो पौधा है वो बढ़ते 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 पेड़ बन सकता है. और ये पेड़ जो है आपको सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देगा, उसके साथ साथ फल फूल सब कुछ देगा, छाया. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट. So this is the beauty of the nature. And of course I would like to explain here that again एक और चीज जो इकोनोस्पीक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम कहना चाहेंगे that we are all on this learning curve. So ये हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे जो यहाँ पे 2-3 साल के लिए आए थे, डॉक्टर मनोज भट्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं. मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी में वो मेजरली ही इज अ टीचर, ही इज अ प्रोफेसर देयर. बट अगेन आई वुड से अ पर्सन जिनसे मैंने बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है. सो सर ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छी सी समझाई थी उस टाइम कि रमन, वी आर ऑल ऑन द लर्निंग कर्व. द ओनली डिफरेंस इज somebody is on the edge and somebody is in the middle and somebody is going up. सो आपको सिर्फ देखना क्या है, आपको इससे हमेशा एक चीज याद रखनी है कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले ये याद रखो कि वो भी अभी सीख रहा है.
So जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम 6 लोग हैं, ऑफ कोर्स हम लोगों के एज ग्रुप्स और एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट हैं. सो जितना जिसका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आगे बढ़ता जाएगा. सो इधर भी मैं फिर से कुकरेजा मैम का एक एग्जांपल लाऊंगी. कुकरेजा मैम एक बात हमेशा बोलती है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस. So you have to learn it yourself and from the experience of the others. Definitely, ma'am. Lovely words, ma'am. Thank you for your words. And with your permission, should I conclude this session Uh, if with if my words? if I just want to ask if the mic of Miss Gurvinder Kaur Suri, if it's working. Yeah. Am I audible to everybody Yeah, now? you are audible now. We'll put our Yeah, mics on ma'am. mute. Yes, ma'am. Definitely. All right. Anyway, I apologize for the inconvenience. It is all technical, and as we've been talking about it, it is anticipated. So I'll keep it very short because everybody has beautifully added to the concept, and I think I'll try and cover it in two aspects. Like for one, which the topic stands, which is simple living and high thinking, and the other for which Miss Raman actually handed over, which is related to education. Yes, I hold experience across psychology, English communication skills, and other aspects of education, be it administration, be it coordination, be it handling parents. So yes, we'll be talking about it. Now, if I have to put across everything that we have talked about by far, I think there's something that is common amongst all of us. And if we ask ourselves that question, we will get one answer, which is humanity. We are human. We are social beings, and something that cannot be taken away from ourselves is humanity in itself. And where does it begin? It begins from a thought, a kind gesture, you know, a simple act of thoughtfulness, consideration. It all acts as humanity, and as humans, the core to everything is happiness. If I'm sorry, but I'd like to question if I'm audible or not. Yes, you're very much audible. We can hear you. Okay. Continue. Thank you. So, if I have to quote, since I am an avid reader, there's something that I've read and that has always stayed with me for reasons that will take too long, so I will not discuss about them. But there's something that we hear very often, and it is overused. And there's a difference between knowing something and understanding something. So I'm quoting it here, thinking that everybody amongst the speakers obviously understands, and that is the reason why we are here. Which is that happiness does not depend upon what you do, what you have, who you are. Rather, it depends, or it relies upon what you think. And the very topic that we've picked up today is not just related to how are we leading our lives, but also takes us to ponder as to how we can contribute to the world. And as a society, we can make a huge difference, a huge change only through our thought. And so, when we talk about simple living and high thinking, simple living and high thinking can be taken into many aspects, can be explained in a lot of ways, and everyone has explained it so beautifully. I had a lot of points which have already been spoken. So, if I have to, um, we conclude everything that everybody has come up with, I'll take it in about, say, 3 to 4 points. One is that we know that anybody who has a lot of luxury, who has a lot of money, is not assured of happiness. And when we know that happiness is everything,
Happiness is not just limited to ourselves, but uh, to the relationships we have, to the people we have around, which we've been discussing by far. And so we already know that if somebody has a lot of money, a lot of luxuries, you cannot assure that that person is happy. However, if somebody who has less money, which is not out of choice, of course, somebody who has a lot of luxuries has to make a choice to live simply. But somebody who doesn't have a choice, most of you will experience that all those people know how to be happy in those limited resources also. And the best example to put forth here would be these times, these unprecedented times that we are living in, which is because of the novel coronavirus. All those things that we thought 2 months ago were the most important are the very things that today we don't even want to think about, be it clothes, be it luxury bags, be it the vehicles we drive, or anything and everything. So, what does it all boil down to? It boils down to the fact that simplicity is the core to human values. And when you live simply, you make up space, you free up space in your mind that actually gives you energy to focus on the higher pursuits. And the best example here for that would be EconoSpeak, wherein the idea came to the founder, Ms. Ramanpreet, only because, you know, she came across people, she had experiences wherein people had time and they did not know how to utilize, how to channelize that time and energy. And that is the best way of understanding what living simple and thinking high would mean. As also a student and teacher of psychology, I would like to cite the longest study that has been done. And that study has been basically done on happiness. This was from Harvard University. And this particular study is called the longest for a reason, because there were subjects who joined this study as a subject uh, when they were 19, and even when they passed away at the age of 87 and 91, they were still a part of that study. And this study wanted to only know how can happiness be ensured. How do we know who are happy and who are not happy? So, right from interacting with the doctors to understanding their lifestyles to interacting with the family, everything was done to understand how these people are leading their lives. And what we got to know, and there's a video for the people who would like to know further about this study by Robert Waldinger. I think it's on TEDx, but I'll try and keep it short. What we got to know from that study is only one thing, that there's just one thing that keeps everybody happy, whether at the age of 20, you're in your 20s, you're in your 30s, 40s, up to 90s, just that one factor, and that is relationships. And I think the way EconoSpeak is creating those relationships, nurturing those relationships, and planning on more relationships to be added itself speaks of the value this particular plant has. And so when we talk about, uh, if I get back to the example that I gave, the Corona times, I think we've never lived in times like these. And that is the reason why now we have time and we have energy, we have free space in our minds, and we have time to spend with our families. It couldn't have gotten better. I would always like to look at the brighter side of anything that happens. And although Corona is not something that we can be happy about, but yes, we don't have an option. And if we are left with choices, it is to either look at the brighter side or to just crib about what has happened. Along with taking precautions, it is important that we understand that Corona is the only thing, the only uh, I would say, force that has imposed time on us, time to be spent with families, time to check on our loved ones, on our dear ones, whether friends, whether the people we have known as acquaintances, but they have always helped us grow. And so it is extremely vital that whether this corona recedes anytime soon or it takes its time, we understand that there's nothing that is more um,
satisfying. There's nothing that adds to a higher level of thought than the relationships we have around us. As Confucius has said that life is really simple. It is it is us. We are the ones who insist on making it complicated. And the example that I just cited about Corona times, these unprecedented times, is the best way of understanding how nothing else is important. It all boils down to us living simply, because nothing else matters but the people around us, but the society around us. And even if we talk about economics, the guiding principle in economics has to be and is meeting the needs and not greed. So I think if I have to conclude on this particular topic, which is simple living and high thinking, if we decide on the things, on the aspects of life that are more important, then you automatically get what you have ever wanted, any human being has ever wanted, that is happiness. And that values the idea of simple living and high thinking. So if we begin to shed the non essential things from our lives, we become lighter, we become happier, and we are more in a position to think of contributing to the society rather than thinking of running the race of attaining. So I think it is, I take it as a privilege that I've been able to speak here about um, simple living and high thinking. Already Dipanshu started with happiness, and so on. All the aspects of this topic that I've covered have already been spoken about. So the core is what all of us all together believe in, and I hope that be it the youth, be it the little stars that the parents are bringing up, all of them understand what is important, and it is only and only one thing: relationships that lead to everything else that you need in life, be it happiness, be it satisfaction, be it success. Because even though you might have everything, you will never be assured of happiness if you don't have the core values. So thank you very much for letting me cover on this aspect. The other that Ms. Ramanpreet had handed me over for was education. And I would really appreciate, Jayashree, if you could just repeat the question for everybody who would be watching this. Am I audible? I think the question was regarding the education when we are actually teaching at higher level or whether at the primary level. The problem that we are facing is that in the higher education, the students are themselves responsible. Yes. But the problem lies when we are talking about the education system, especially for the ones who are below 18 years of age, and specifically when we are talking about the primary ones, the kindergarten. So the problem is not only with the choice that you have already mentioned, that we don't have a choice. Now this is something that is forced, but the idea is that now you can either take it as a blessing or you can crip forever. So I was just asking if you can elaborate on the same, because you are facing these difficulties Sure. from the parents' side as well. Sure. And I again take it as a privilege to be able to speak something about it, because I have a versatile profile right now. I've been into education for over 1.5 decades, but right now the position that I'm handling includes educating the students of 11th and 12th. It also includes designing curriculum for pre-primary, that is 3 to 6 years of age, and at the same time coordinating and training the teachers who are the skilled people who are going to deliver everything that we design. Now, because that there's something that we need to understand. The curricula that we have, be it in India or abroad, are all based on a few principles, very scientific, um, developmental principles. And most of the educators are not familiar with those principles. They are teaching well, they are doing everything to the utmost ability. But the problem is direction. And same is the problem when it comes to the parents and the children, that they don't have a direction. And then they start to question.
And when they question, they have no idea of the basics. So right now, see, as I said, these are very complicated times. We've never faced them. So everybody is facing these challenges and trying to adjust to them. Be it the kids, the little ones, or the ones in secondary or senior secondary education, the parents, everybody, the educators, administrators, all of them are facing challenging times, because no matter how developed we are dependent technologically, but we are not um, totally and completely equipped with the resources that we should have. Now, to give you an example, I have worked with EYFS, which is the British curriculum. I've also worked with Montessori. These are all pre-primary curricula. I have worked with IB. I've worked with ICSC. Now, if we look at all these curricula, they have certain principles. Whether the child is at home, whether the child is in the class, we can very well cater education. But at this point, not all schools are equipped with those. And that is the biggest challenge. The teachers are working, if nothing, 10 times more, but the output is probably 10 times less. And the only reason for that is that we are short on resources and skills. Um, and I couldn't insist more on the skill gap that we have. Teachers are wonderfully educated. They know what they have to teach, but how do they do that? What is the platform to carry that out? And to work that out, past 2 months have already gone. So we are basically into a mode where we are trying and falling short. So trial and error. As educators and part of education, it is important that we understand that teachers are not the only ones who can teach in times like these. Parents have to contribute, and because they are not professionals, they are not the trained people, and we cannot carry out education the way most of the countries abroad might be carrying out. In fact, because I'm in touch with a lot of councils, I've seen that abroad also with British curriculum, with IB, educators are facing challenges because they were also not ready. They did not anticipate something like this. So it is really important, first thing, that the educators as well as the parents, they join hands and they come together to carry out education in the best of its meaning. Secondly, it is important that the guidance and training is provided simultaneously, because whether it is the educators or parents, they don't know everything, and they don't know anything or everything about technology either. So guidance and catering the services to the utmost will require support, be it support of government, be it support I can hear, I'm really sorry, but I can hear some sort of disturbance. Am I audible? If I could get a confirmation. Yes, you're audible. Am I audible? Yes, you're audible. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. So, again, to put it in a gist, when it comes to education, especially pre-primary education, we need to work toward building firm foundation, because they are the ones who are going to have the weight of this nation and otherwise on their shoulders in the future. And whatever we are working towards right now, be it this initiative of EconoSpeak and so many more out there in the world, ultimately it is all going to be full-fledged when these little ones grow up and they are the ones carrying out everything for us. So it is important that there's guidance. It is important that there is scaffolding effect where all sort of support is being provided. Also, it is a huge challenge. So everybody who's anxious out there as to how the syllabus will get over, or how a particular concept is going to be taught, everybody should understand that, be it educators, be it parents, be it children, everybody needs to understand that the pace will itself have to be slowed. But when we come back to traditional classroom teaching, even then, we'll see that now e-education, whether it does not come to us in a very positive way, or rather not for positive reasons, but it will always be a part of education now. So education is going to imbibe e-platform
in its own. And so it will take time for everybody to adjust to that. And maybe the times that we have right now, till the time the virus is gone, we will all be adjusted, accommodated with the ways. And when the school reopens, be it for a nursery student or a 12th standard student, for everybody, covering syllabus is not a problem. But educating, and because education is not just about the concepts we teach, education does not stop just because coronavirus has set in and we are not conducting classes traditionally. So this is I urge all the parents and educators to join hands together, to be compassionate towards each other, because these are not challenging times for one, not just for the parents' end, not just for the children's end, not just for the educators' end. It is a challenge for everybody out there, and everybody is trying their best to make the best of these times. So with that, I thank everyone for giving me the opportunity, and I hope that EconoSpeak flourishes and makes the difference it has always thought of making. And I hope to be a part of it. Thank you very much, all of you. Thank you so much, ma'am, for your lovely words. I would like to mention a line that you said that for some people it's a choice to live simply. I very well agree to it. It's the truth. It's actually the truth that it's a choice. It depends on who agrees to it and who not, who doesn't. So, with permission, with Ramanpreet ma'am, I would like to conclude this session. Thank you, Jayashree, and all the other speakers. Though technically we should actually conclude the session, but there are a few points which I just want to highlight. Probably those are very important points. One thing which we all should remember, which has been taught to us by all the influenced people, by preachers, by each religion, one thing is that God is one. We should remember this. Second, that we are creators of God. So we don't need to find God in the places like Gurdwara, Mandir, the infrastructure, but actually we need to explore that God is within, and it is surrounded by, or we can say it is surrounded around us. So one more thing which I should explain here is that we should not forget the teachings of the God or teachings of our Guru. One was Sarbat da Bhala. ये एक पंजाबी की तुक है. इसका मतलब ये होता है कि जब अपनी प्रेयर्स करते हो ना, तो सिर्फ अपने लिए मत मांगो, सबके लिए मांगो. सरबत दा भला मीन्स कि हैप्पीनेस फॉर ऑल, greater happiness is greater number. Now another one which we want to say is that remember God in all the prayers. आप चाहे कभी भी प्रेयर करो, कर पाओ ना कर पाओ, खाना बनाते समय, अपनी पढ़ाई करते समय, जो भी कर सकते हो उस टाइम पर ये चीजों का ध्यान रखो. Then I would also like to add on that we should not be rigid. आपके जो भी religious beliefs हैं, उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा rigid मत होते जाओ. For example, now I've seen many people, they are very rigid that they will be going to the temple, they will be going to the Gurdwara, or they'll be going to the holy place only because they believe, they have a superstitious belief that if we won't go, if we will not go, then something bad or wrong will happen to us. So it's not like that. Now there are various reasons behind this rigidity, I would say. Among those reasons, one was this. Another one was that many people believe that the aura or the positive vibes that are created in the holy place is not created at your own place. Now think about corona. इस पूरे 2 महीने में आपने वो aura, अपनी वो positive vibes घर में भी बनाई हैं, आगे भी हम कर सकते हैं. Then some people go for name and fame. Again, I would disagree with this, because many of the people are just going because they believe that the society is looking them, that whether they're going to that place or not going to that place. Another point that I would like to mention here is for fulfilling their own dreams. जैसे कि हम desires और dreams की बात बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग सिखाते हैं और हर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल इस बारे में बात होती है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुकी है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सारी इच्छाएं जो हैं वो भगवान के हाथ छोड़ देते हैं कि भगवान तूने ये इच्छा पूरी करनी है. क्या तुम खुद उसके लिए कोई भी एफर्ट ले रहे हो या नहीं, ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है.
Then another point which I'll mention here again because I'm a social scientist. So social animal, जो human beings हैं वो भी social animal हैं, जिसको हम कहा जाता है कि अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये समझा जाता है कि उनकी ग्रोथ हो नहीं सकती. I agree to this point, definitely I agree to this point, but we need to understand that we are actually witnessing the dynamic change, or we are witnessing this paradigm shift which is required in the present scenario. सो क्यों ना हम वर्चुअल वर्ल्ड में मिल लें. अभी भी तो हम लोग यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं. वो तो अभी हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स है कि हम 6 लोग ही एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली थ्रू मैसेजेस, थ्रू जब हम इसको अपलोड करेंगे या फिर जब हम लाइव सेशंस करेंगे, अभी तो LMS सिस्टम के बारे में सबको पता है और इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ सकते हैं. सो आने वाले टाइम पे हम कुछ हद तक एटलीस्ट पैसा भी कर सकते हैं. Now I'll give you I'll quote an example which was my own family's example only, which is मेरी ही मदर जो है वो उनके स्कूल के, आप सोचिए 10th का उनका स्कूल का जो बैच है, उन्होंने पिछले 3 दिनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया. जो लोग 30 साल से नहीं मिले वो 3 दिन में मिल गए सिर्फ कोरोना की खातिर. सो कोरोना इज नॉट ओनली द नेगेटिव, मतलब वही जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कोरोना से सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही नहीं है, ये कोरोना से हमारी पॉजिटिव वाइब्स भी बहुत सारी आई है. सोचना यह है कि हमारा नजरिया क्या है, देखना यह है कि हम कौन सी साइड देखना चाहते हैं. यू हैव अ चॉइस. ऑफ कोर्स आपके पास ये चॉइस नहीं थी कि आपको ये एक्सेप्ट करना है या आपको रिजेक्ट करना है, वो आपके लिए फोर्सफुली एक डिसीजन आपके ऊपर आ गया है, बट ये चॉइस तो आपके पास है ना, दैट वेदर यू हैव टू वेलकम दिस डिसीजन और यू हैव टू एक्चुअली क्रिटिसाइज एंड fight against that decision. So this is one of the message. Then I'll ask one question to you all that जितना भी हमें चाहे गुरुओं ने सिखाया, चाहे किताबों ने सिखाया, चाहे किसी ने भी सिखाया, are we actually standing on those principles? Are we actually doing something for that? This is something that you need to ask yourself. So again वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कंक्लूड कर ही नहीं पाऊंगी इस तरह से, लेकिन कुछ मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगी. जो हमारे पैट्रन्स हैं, जो इकोनोस्पीक के पैट्रन्स हैं, उन लोगों ने कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स बोले थे, उनको मैं जरूर रखना चाहूंगी. जिसमें से पहला पॉइंट जो हमारे चीफ पैट्रन है उन्होंने दिया था कि काणी वंड कभी नहीं करनी. काणी वंड अगेन अ तुक ऑफ पंजाबी टेकन फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब जी. काणी वंड का मतलब होता है कभी भी बायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना. दूसरी चीज जो उन्होंने एक और बोली थी कि सांझ करीजे गुनाहे करे छोड़े. इसका मतलब क्या है? टेक ऑल द पॉजिटिव्स from each and every individual you see, each and every activity that you see around, and leave all the negatives behind. So आपको सोचना यही है कि हर पॉजिटिव चीज को लेते जाओ और नेगेटिव चीज को छोड़ते जाओ. तो अगर आप लॉकडाउन पीरियड से भी कुछ सीखना चाहते हैं तो पॉजिटिव चीज ले लेते हैं और नेगेटिव चीज को छोड़ते जाते हैं. इसी तरीके से आज ही जो एक और एग्जाम्पल जो पैट्रन्स ने दिया था वो ये भी दिया था कि गुरु नानक देव जी ने तो बहुत पहले ही ये चीज शुरू कर दी थी कि लंगर जो एक फ्री लंच जिसको हम बोलते हैं, वो क्या था? वो ये था कि आप कभी भी वितकरा नहीं करोगे. आप कभी भी खिलाते समय ये नहीं सोचोगे कि वो किस कैटेगरी का, किस स्ट्रैटा का आदमी है. जब आप खिलाओगे तो आप बराबरी में तोलोगे. आप ऐसा नहीं कि कोई अमीर ज्यादा जो है, करोड़पति जो है वो आया है तो आप उसको खिलाओगे तो उसको चांदी के बर्तन में खिलाओगे, सोने की थाली में खिलाओगे, और जो गरीब बेचारा आया है उसको तुम पत्तल दोगे. ऐसा हमारे गुरुओं ने कभी सिखाया ही नहीं. तो ये भी एक मैसेज था जो उन्होंने दिया था. एंड शी वाज कोटिंग वन ऑफ द एग्जांपल दैट व्हेन अकबर इन द पास्ट केम, so somebody in the society told them कि अकबर जी आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाया जाए, उनका जो स्वागत है वो इस तरीके से किया जाए. तो उस टाइम पे भी ये बात करी गई कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो खाना हम खाएंगे वही खाना सब खाएंगे. इसी तरीके से हमारे गुरुओं ने तो बहुत बात बोली है, जिसमें से अगेन वन ऑफ द बेसिक मैसेज गिवन बाय द चीफ पैट्रन वाज दैट देयर शुड नॉट बी अ pomp and show. There should be more of reality. We should actually learn from the reality and should not go with the society's race जो नरेंद्र भी बोल रही थी. एंड अगर हम और एग्जाम्पल्स दें तो एग्जाम्पल देने के लिए तो एक्चुअली इतने लोग हैं. अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल दें, गांधी जी का एग्जाम्पल दें, अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल दें, ये सभी गुरु थे जिनको हम लोग आज मतलब पूछते हैं और हम लोग याद करते हैं. क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी सबकी थिंकिंग, सबकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन कर रही थी, दैट दिस शुड बी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग.
और इसी तरीके से जब मैं आप लोगों के लिए लास्ट में अगर एक कंक्लूडिंग नोट छोड़ूं तो मैं सिर्फ यही छोड़ना चाहूंगी दैट व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, now whatever you will be doing, every action will bring an equal and opposite reaction, so you have to decide that what will be your action. So इसी के साथ अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट तो बीत चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप अपने प्रेजेंट में चेंजेस जरूर ला सकते हैं. सो यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी योर चॉइस. अगर आप आज ये प्लेज ले लें, अगर आप आज हमारे साथ ही ये जो हमारा भी एक छोटा सा इनिशिएटिव है और उसमें हम लोग कुछ इसी तरीके की चीजें कोशिश कर रहे हैं लाने की, तो अगर आप हम लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, जो हमारा बेसिक, अगर हम 5 पीस की बात करें, आप हमारे पेज पे देखना 5 पीस के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है. सो जो लास्ट पी था वो था पार्टनरशिप. So partnership is what Gurvinder was also highlighting, that we need to join hands if we need a growth in the economy. Again, अगर हम ये बात करें जब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलते हैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी दैट डोंट फॉलो द बैंडवेगन इफेक्ट, फॉलो द स्प्रेड आउट इफेक्ट. और जो नॉन इकोनॉमिक्स के लोग हैं उनके लिए मैं इसको सिंपल भाषा में भी समझाना चाहूंगी. बैंडवेगन इफेक्ट होता है भेड़ चाल. भेड़ चाल की तरह किसी चीज को फॉलो मत करो, स्प्रेड आउट इफेक्ट लाओ. स्प्रेड आउट इफेक्ट होता है जब आप बढ़ते हो तो इस तरीके से बढ़ो कि आप रोशनी बाहर फैलाओ. तो सन इज द एग्जाम्पल, वो खुद जलता है बट उससे जो रोशनी पैदा होती है वो सबके लिए लाइट भी लाती है, रिफ्लेक्शन भी लाती है. अगर आपको विटामिन डी के बारे में पता हो तो वो भी हमारे वो एक ही सोर्स है. और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो सन के थ्रू हमें मिलती है. So I'll conclude here by saying that if you want to bring a change in the economy, so first start bringing that change from yourself. अगर आप चाहते हो कि इस इकोनॉमी में आप चेंज लाना चाहते हो, so who will be bringing that change? So be the change and bring the change. Start it from your own self. So thank you all. I would request Jayashree to finally conclude the session. Jayashree, can you hear me? Thank you so much, ma'am, for your lovely words. I would like to thank all of you for being here with us today. I would like to thank EconoSpeak for joining us and sharing their views with us, all the members of EconoSpeak, and Ma'am Ramanpreet, the founder of EconoSpeak. I wish you all good health and happiness. Thank you so much. Thank you, Jayashree. And thank you all of you, Harshita and Astha, for coordinating and cooperating. Thank you. Okay.